माइनस है ना। देखो नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार अहिरवार, सहायक प्राध्यापक बाड़े, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय बाबू महाविद्यालय नौगांव। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे FIFO मेथड के बारे में। FIFO मतलब हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, अर्थात अधिकतम मूल्य में आना तथा पहले जाना पद्धति। जैसा कि नाम से हमें समझ में आ पा रहा है, इस पद्धति में उत्पादन विभाग को वह सामग्री सबसे पहले इशू की जाती है जो स्टोर में हाईएस्ट मूल्य पर या अधिकतम मूल्य पर क्रय की गई। मतलब जो सामग्री अधिकतम मूल्य पर क्रय करेंगे उसे ही हम उत्पादन हेतु उत्पादन विभाग में सबसे पहले निर्गमित या इशू करेंगे। इस पद्धति के अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि जो सामग्री सबसे अधिक कीमत पर खरीदी गई है उसे हम माल उत्पादन कार्य के लिए सबसे पहले इशू या निर्गमित करते हैं। जिस दिन उत्पादन विभाग सामग्री निर्गमन हेतु आवेदन या मांग पत्र प्रस्तुत करता है तो स्टोर विभाग यह देखता है कि उस कैटेगरी में अधिकतम मूल्य वाली कौन सी सामग्री उपलब्ध है, उसे वह सबसे पहले इशू या निर्गमित कर देता है। सामान्य तौर पर इस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जो एकाधिकार वाली कंपनियां या फर्म रहती हैं वह इस पद्धति का उपयोग कभी कभी करती हैं। इसमें क्या होता है, सबसे लास्ट में वह सामग्री स्टोर के पास बचती है जो सबसे कम मूल्य वाली रहती है। अधिकतम मूल्य वाली वस्तुएं या सामग्री पहले ही इशू कर दी जाती हैं उत्पादन प्रक्रिया संपादित करने के लिए। अब इस विधि को विस्तार से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि FIFO पद्धति का उपयोग करते हुए स्टोर लेजर अकाउंट का निर्माण कैसे किया जाता है। एक प्रॉब्लम हमारे सामने दी गई है, एक कंपनी के कुछ डाटा दिए गए हैं जिसके माध्यम से हमें स्टोर लेजर अकाउंट FIFO पद्धति का उपयोग करते हुए बनाना है। 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस दिया गया है 450 यूनिट का, 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। 5 अप्रैल को परचेज किए गए हैं 500 यूनिट, 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। 12 अप्रैल को 350 यूनिट परचेज की गई हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 20 अप्रैल को 300 यूनिट क्रय की गई है, गुड 2 रुपये मॉर्निंग, 25 गुड पैसे के मॉर्निंग, हिसाब गुड से। मॉर्निंग, गुड इसके बाद मॉर्निंग। 10 अप्रैल को 400 यूनिट इशू की गई हैं। उसके बाद 15 अप्रैल को 200 यूनिट इशू की गई हैं। उसके बाद 18 अप्रैल को 300 यूनिट इशू की गई। उसके बाद 25 अप्रैल को 350 यूनिट इशू की गई। इन सभी जानकारी के आधार पर हम एक स्टोर लेजर अकाउंट तैयार करेंगे FIFO पद्धति का उपयोग करके। स्टोर लेजर अकाउंट अंडर FIFO मेथड। जैसा हमने पहले चर्चा की है कि स्टोर लेजर अकाउंट में 4 मेन कॉलम रहते हैं। पहला डेट का रहता है,
दूसरा रिसिप्ट का रहता है, तीसरा इशू का रहता है, चौथा बैलेंस का रहता है। हमारे पास एंट्री दी गई है 1 अप्रैल को कितने यूनिट का बैलेंस दिया गया है? 450 यूनिट का। किस रेट पर? 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। हमारे पास बैलेंस कितना हो जाएगा? 990 रुपये का। उसके बाद हमने 5 अप्रैल को क्या किया है? 500 यूनिट क्रय की गई हैं। किस रेट पर? 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। मतलब 1050 रुपये का स्टॉक क्रय किया गया है 5 अप्रैल को। तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा 5 अप्रैल को? 450 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से पहले से हमारे पास उपलब्ध थी। 500 यूनिट 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 5 अप्रैल को क्रय कर ली गई है। तो बैलेंस बढ़ के हो जाएगा हमारा 450 यूनिट प्लस 500 यूनिट। Good morning, guys. This video is for an information. Right now, I am selling an YouTube channel. That channel has more than 18.5k subscribers, and it is fully monetized, and AdSense is also active. So, if you want to buy this channel, contact now. We'll discuss the price and negotiations in the DM or call. So, if you want the channel, DM me. Let me show you the channel. You can see it on my laptop screen. Give me a second. So this is the channel. Here is the screenshot. You can see. Let me show you more screenshot. Tiger. 무슨 가방 했을게? 응? 너는 뭐? Hello guys. Hello. Good morning all. Very good morning. Nah. Orange zone. Editors stay broke for most editors stay broke for one reason. 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 They upgrade gear, but not their mindset. They upgrade gear.
gear, but not their mind. Upgrade gear, but not their mindset. They 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 upgrade.
দুইটা কত বুঝে Guys, please hit the like button and subscribe to my channel. Like this stream.
What was it? 8:30। तुम बात कैसे बना? Oh. Waduh, kayak suka aku belajar deh. Itu nonton ya. Tiro.
can uncheck these values, or maybe let's just keep it over here. Just scale this down till you find something that looks good. Now on this one, we are going to change the fill, and I'm going to set this to 100. Stroke, we can set this to 0. Maybe let's increase the size a little bit. So this looks good. Now we can select this. Let's search for rounded corners, increase it a little bit. So this to 50, or maybe 40 looks good. Perfect. Now we want our shape to be visible through this window. So for that we Alright, so I'm in After Effects, and today we are going to create this linear carousel animation. But if you want to make this 3D rotating carousel, then I have uploaded a tutorial on that as well. You can watch it right now by clicking on this link, or you can click the link in the description as well. Now let's continue. Here I have already imported a couple of these images. Now it's completely up to you. You can use any image, video, or whatever element you want. So first let's begin by creating a new composition. Let's call this one main. Width and height will be 1920 by 1080, frame rate 38 page, duration just pick whatever you want, click on OK. Now we are going to create our first carousel composition. So let's call this one image 1, and for this one I'm going to set the width to 500 by 600. Now for this one I'm going to make vertical carousel, but it's completely up to you. You can make horizontal ones as well, so depending upon that you can change the width and height. Rest of things will remain same, just click on OK. Now here we have our composition. Now inside this we can drag any of these images. So let's drag this one. I'm going to quickly press S. Let's just scale this down. Now we can add a little bit of border to this. So for that, let's select the rounded rectangle tool. Then just simply double click on it and make sure that you are inside this layer. Once you have that, let's search for size, and we can uncheck these values, or maybe let's just keep it over here. Just scale this down till you find something that looks good. Now on this one, we are going to change the fill, and I'm going to set this to 100. Stroke, we can set this to 0. Maybe let's increase the size a little bit. So this looks good. Now we can select this. Let's search for rounded corners, increase it a little bit. So this to 50, or maybe 40 looks good. Perfect. Now we want our shape to be visible through this window. So for that we can select this and just change the track matte and just pick whip this. Now in case you're using the older versions of After Effects, then you won't have this pick whip. You will have like alpha matte, alpha inverted. So you can just update it to the newer versions. Now we want to have a little bit of border as well. So for that we can select this layer, press Ctrl D. Let's place this at the bottom, and we want it to be visible. And on this one we can change the fill to 0, and let's just increase the stroke. I'm going to set this to 8. So now you can see we have this very nice border around it. For the color, it's up to you. I'm going to use this blue color. Now here we have our first carousel window. In the same way, you can create any number of windows. You can like have 5, 10, 20 or whatever you want. So I'm going to select this. Let's press Ctrl D. I'm going to create 6 windows. So let's press Ctrl D 6 times. So we have 6 layers. Now select the image 2, and on this one we can select this image. All we have to do is replace it by simply selecting this layer, hold on the Alt key and just drag it onto this. So you can see now it has replaced it. We can press S to scale this up. Now we have image 2. Let's go to image 3. Select this, hold on the Alt key, select this image and just drag it onto this. Press S. We can play around with the size of it. Maybe let's place it over here, and the same way you can change the images in the rest of the compositions as well. So before we continue, if you enjoy my work and you want to support me, then you can check out my Patreon page. Over there you will get access to the tutorial project files, exclusive templates and all the other advanced VFX and CGI tutorials that are available only on Patreon. So make sure to check them out. Link for that is in the description. Now let's continue. So now I've changed all of these images. Now our next step is to create the carousel. So for that, first we can import one of our images inside our main composition. Now first let's create a controller. So right click new, let's add a null object, and we can call this one controller. So just rename it, and make sure you rename all of these layers and effects correctly, because if you don't, then expressions won't work and you will get a lot of errors. And on top of this, we are going to apply slider controller. So let's search for slider controller and let's drag it onto this. Now we're going to rename this, and I'm going to call this one index. Now let's press Ctrl D to duplicate this. Let's call this one spacing, and let's duplicate it 2 more times, and this one we can call it min scale, and this one we can call it max scale, like that. Now again, make sure your spellings are correct, otherwise expressions won't work. So once you have added this, we are ready to add our expression. So for that, I'm going to use this one. So just simply select this, press Ctrl C to copy it. Now we can paste it to the image. So let's select this one. Let's press P for position, hold on the Alt key, and let's click on the stopwatch. Now if I press Ctrl V, you can see our expression has been pasted and we are not getting any errors because all of our layers are correctly named. Now we can
paste the expression to the scale as well. So let's select this, press S. So now for the scale, we are going to use this expression. Now I will put all of these expressions in the comments or the description below, so you can copy it from there. Just copy it and go to your image, hold on the Alt key, click on the stopwatch and just paste it. Now your image will disappear because our scale is set to 0. So max size we can set this to 100 and minimum size, it's up to you, you can set this to 50 for now. Now we are done with our expression. Our next step is to create this carousel. So for that we can select this layer and let's duplicate it like 6 times because we have 6 images. There you go. Now we can select our controller and we can increase the spacing between them. It's up to you, you can just increase it however you want. Now we can navigate to any of these images just by simply animating this index slider. So for example, if I set this to 2, then you can see it will go to the second image. If I set this to 4, then it will go to the fourth image. And the same way you can animate it as well. But first we have to replace all of them with their respective images. So let's select this image 1 and we can replace it by our image 2 by holding down the Alt key. Just click and drag. There you go. Now let's select the next one. Hold on the Alt key, click and drag. Select the next one and repeat this till you have changed all of these images. So now I have updated all of them. Now it's completely up to you. You can create a carousel for like 10 images, 20 images or even 100 images. All you have to do is just duplicate these layers and later on you can animate them using this slider. So first let's just simply set it to, let's say, somewhere around 4. Then we can add a keyframe. Let's press U. Let's move like a little bit ahead and we can easily change it to, let's say, 6. So it will go to the last image. We can go a little bit more and let's just set this to 1. So it will go to the first image. Now if I press play, you can see all of these images will be animating like that. You can also select these keyframes and press F9 to easy ease them. Let's go to the graph and we can change the curves to look like that to create a little bit of more interesting motion. So they will start slow and then they will have this quick motion like this. Now if you want to fill this gap, then what you can do is you can select all of them, press Ctrl D and let's just place them at the bottom. Again press Ctrl D and let's place them at the bottom as well. Now we have this very long carousel. Now we can increase the slider counter as well. So let's say we set this to 16 and then you can see it goes back to 6 and we can maybe set this to 12. Just simply animate them wherever you are. Instead of coming to back to 1, we can just set this to, let's say, 15. So now if I press play, you can see our carousel will animate and it will go to its respective position just like this. Now you can play around with all of these parameters a little bit more. So for example, if I select the spacing, I can increase the space between these images however I want. I can also play around with the minimum scale. So if I want all of these images to be smaller, which are like far away, then you can just set this to like this negative value. So now you can see all of these images will become smaller as they are going far away from the center. We can also increase the scale of the middle image and we can play around with the spacing and we can like make them even smaller. There you go. Now we have created this look. So in this way you can customize this depending upon what kind of look you are going for using these slider indicators. So once you're done with this, we can add some really nice glow to this. So let's. Hey everyone, my name is Abhishek and today we are going to create this 3D carousel animation in After Effects without using any third-party plugin. For this we are going to use expressions only, no keyframes, no complex mathematics, nothing. This is just simple After Effects. So let's see how to make this. Alright, so I'm in After Effects and here I've already imported a couple of these images. Now it's completely up to you, you can use any image, video or whatever element you want. So first let's begin by creating a new composition. Let's call this one main. Width and height will be 1920 by 1080, frame rate 38 page, duration just pick whatever you want, click on OK. Now we are going to create our first carousel composition. So let's call this one image 1. And for this one, I'm going to set the width to 500 by 600. Now for this one, I'm going to make vertical carousel, but it's completely up to you. You can make horizontal ones as well. So depending upon that, you can change the width and height. Rest of things will remain same. Just click on OK. Now here we have our composition. Now inside this, we can drag any of these images. So let's drag this one. I'm going to quickly press S. Let's just scale this down. Now we can add a little bit of border to this. So for that, let's select the rounded rectangle tool. Then just simply double click on it and make sure that you are inside this layer. Once you have that, let's search for size and we can uncheck these values, or maybe let's just keep it over here. Just scale this down till you find something that looks good. Now on this one, we are going to change the fill and I'm going to set this to 100. Stroke, we can set this to 0.
Maybe let's increase the size a little bit. So this looks good. Now we can select this. Let's search for rounded corners. Increase it a little bit, just to 50 or maybe 40 looks good. Perfect. Now we want our shape to be visible through this window. So for that we can select this and just change the track matte and just pick whip this. Now in case you're using the older versions of After Effects, then you won't have this pick whip. You will have like alpha matte, alpha inverted. So you can just update it to the newer versions. Now we want to have a little bit of border as well. So for that we can select this layer, press Ctrl D. Let's place this at the bottom and we want it to be visible. And on this one we can change the fill to 0. And let's just increase the stroke. I'm going to set this to 8. So now you can see we have this very nice border around it. For the color, it's up to you. I'm going to use this blue color. Now here we have our first carousel window. In the same way, you can create any number of windows. You can like have 5, 10, 20 or whatever you want. So I'm going to select this. Let's press Ctrl D. I'm going to create 6 windows. So let's press Ctrl D 6 times. So we have 6 layers. What's up guys, it's time to learn the HUD SD card carousel effect. This is probably the most requested tutorial, so I thought let's sit down. I'm gonna break down all the techniques, everything you need to know about creating this awesome effect. This is literally the most requested tutorial. So this effect is not just for advanced After Effects cracks. If you are a beginner, if you have opened up After Effects a couple of times, you're totally right here. I explain everything in detail on a slow pace, so you can just follow along with all the details. We don't leave anything out. So I'm super hyped to get this one started, to teach you the SD card carousel effect. Alright, so the first step is of course recording your footage. And you can see right now here, the clip I'm playing is the original clip I recorded. I actually used the FX3 with a helmet. That is quite an expensive setup. You don't need that type of setup to create this effect. I also have that mouth mount here, which is really amazing. You can just throw it in and then record your shots in POV. Or another thing you can do if you don't have that mouth mount, no worries, you can still follow along this video. You just take out your SD card, you put on a video on your phone, you just hold up the card and film it yourself. Those are the options you have to get the original clip, the footage, so we can jump into After Effects and create the amazing HUD SD card carousel. First thing we're going to do is to create here a new project. Boom, here, new project, up here to the left. And now we are going to import our clip with Command I. So pressing Command I, I'm directing here to my folder I created. I just created the folder with the name HUSD card carousel. And then here I have the footage folder. I could import the clip in here. Nice. The next thing you need is the clips you want to actually insert into the carousel. So let me import those placeholders as well. So here I'm importing the placeholders. Here in the purpose of the video, I'm just using photos or PSD files, but of course we can switch them later on with videos, or you can right away start with videos or your carousel. Now I'm creating a folder with placeholders. Boom, I'm dragged them all in. It's really important to keep everything organized right from the beginning. So now we have the folder here with our placeholders, which I created. I actually created them in a couple of hours just with ChatGPT and Photoshop, and I think that turned out pretty sick. If you're interested in tutorial on how to create graphics like that, let me know. And we have the original clip here. And of course, bring in your own creativity. I'm super excited what you're gonna create with this effect. First step is now we're creating a composition. So we drag here our original clip onto the composition icon. And now we have a composition with the exact frames here and the resolution as the clip, which is super important. And now we need to do the same thing again. So now we are dragging this time the comp, not the clip, onto the new composition icon. Boom. And now we have the clip inside a own composition, and now created a main composition with our comp that we created. And this one we call main comp. And this way we can always do changes to our original clip here inside the comp layer and switch it out or add things. And this is just really important that we keep everything organized and creating those pre-comps. Believe me guys, just follow the steps. And now the first thing we want to do is we need to track our clip. To track our clip, we go in here on the right to the tracker. If you don't see the tracker panel, go up to Windows and make sure here tracker is selected. And we are now choosing to track the motion. So let's click on track motion. This way, here we can see that track point that we can drag bigger and smaller just appeared. And before we start tracking, I actually want to
switch some settings. So we go here into options. Here you can leave everything as it is actually, but we need to change here from adapt feature to stop tracking. This way, when After Effects is not sure if the track is right, it's going to stop tracking. We can adjust manually and then keep tracking or start tracking again. Otherwise, it's going to search for similar looking spots and you might not get a clean track. And the confidence, we want to crank up to 90, boom. So the tracker is really confident. So here you can see now the shot is not 100% perfect. It's a little bit blurry, which makes it harder to track. So if you shoot your footage, make sure it's as sharp as possible. Also with a high shutter, you make sure there is not much motion blur. And my fault here was I was shooting on an f-stop of 2.8, which includes a lot of blur. So for the purpose of this tutorial, it's still gonna work. So don't worry if your shot is a little bit blurry on the card, but I just want to highlight here, it's important to have it really sharp for the best tracking result. All right, now we need to find a spot we want to track. It should be high contrasty. So I'm gonna use here the white text. I'm gonna make the window as small as possible because that way with the window actually defines the tracking area, and if the tracking area is smaller, the track is going to be faster because it doesn't have to scan that much. If you drag it really out, it's going to be a little bit slower. So that is fine, works for me. Now I'm tracking forward and see how the tracker does. Nice. So now the tracker wasn't confident above 90%, so it stopped, which is cool. We can check the track, everything's still good. We can just play the clip here again, boom, and here again, it stopped. And now we can actually bring up the keyframes with view, so we see the area or the sequence, a part of the sequence we already tracked, and this can help. Boom, let's keep tracking, and it actually does a super solid job, man. I'm really impressed. Everything works, stopped again, but still working good. So now it kind of gets a little bit more messy because I'm moving down. So now it still looks good, but you also have the option to just analyze one frame forward or one frame back. And I will go with one frame here to go step by step because I know After Effects is going to have a hard time to track this. So I'm going to make the end kind of manually. Boom, drag it down, boom, drag it down. I really want that as precise as possible. Boom, drag it down. Let's go. Nice. That looks good. Yes, almost there. All right, cool. So now we can check the track with just dragging here the timeline slider like that. Boom. And that looks actually pretty solid, but we haven't tracked until the end. That is not a problem. If you haven't started at the beginning, we can open the keyframes with view, as I said, and then jump to the last keyframe here that we've tracked, and now we have the option to just track backwards. So let's play it again. Maybe go a little bit, zoom a little bit in so we can see actually what's happening, and it's doing a pretty good job. Tracking, tracking, tracking. Yes, it's a super contrasty point you see here, but it's doing a good job. We track it backwards. Now at the beginning I'm coming up with the SD card, so it's the same at the end. After Effects might have an issue, but we could actually also increase the size of the window, and this way it might cause a better result, but I'm totally fine with doing those first and last frames manually. It's quite blurry and it's hard for After Effects. No worries, we got our back. All right, seems like we have tracked the full clip. Awesome. So now it's time to check the track. So I play it back, boom, 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 and guys, this actually looks pretty good. Oh, here on the top, make sure you're always in the right window. So right now I'm on the layer, so I'm just watching the original clip. वेलकम टू द वाइटल वीडियोस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप कुछ इस तरीके का एक मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर बहुत ही कम टाइम में। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इस मोशन ग्राफिक्स को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना देर के हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे और मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको क्रिएट करना है। ओके, तो अभी हमने अपना आफ्टर इफेक्ट को लॉन्च कर लिया। सबसे पहले अपने वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। तो हमारे पास जो वीडियो होने वाला है कुछ इस तरीके का एक वीडियो है। मैंने अपने वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है। अभी एक इस वीडियो से कंपोजिशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारा वीडियो होने वाले। थोड़ी सी कंपोजिशन सेटिंग को हम देख लेंगे। यहाँ पे जाना है, कंपोजिशन सेटिंग आपको कर लेनी है। इस कंपोजिशन सेटिंग में सबसे पहले इसको हम
मेन कॉम्प करके इसका कंपोजिशन का नाम दे देंगे। साथ में देखिए बाकी चीजें मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ। साथ में जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम है हम इसको 1 कर देंगे। हाँ, एक चीज और बता रहा हूँ, देखिए इस तरीके का ये जितनी भी इसमें प्रोजेक्ट फाइल रहेंगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वापस से डबल क्लिक करना है। अभी जो मैं पोस्टर्स का यूज करने वाला हूँ, इन पोस्टर्स को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये आगे मेरे पोस्टर हैं, इनको मैं इंपोर्ट करता हूँ। अभी देखिए कुछ इस तरीके से हमने इन पोस्टर्स को इंपोर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आना है, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। इसको आप पोस्टर करके इसका नाम दे सकते हैं। तो ये सारे पोस्टर को सेलेक्ट करना है और इस फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, क्योंकि जो थोड़ा सा हमारा काम है वर्क फ्लो अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से हम कर लिया। अभी कंपोजिशन में जाना है, एक नया कंपोजिशन क्रिएट करना है और एक बात का ध्यान क्या रखना है, जो हमारे पोस्टर होने वाले हैं वो वर्टिकल पोस्टर्स हैं, इसलिए हम कंपोजिशन का साइज भी वर्टिकल रखेंगे। वर्टिकल कैसे रखेंगे, हम इसको स्वैप करेंगे। ये 1920 है, हम इसको 1080 करेंगे, इस वाले को हम 1920 करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमने कर लिया है। अभी देखिए मेरी जो फ्रेम रेंज है 450 की है, यही रखने वाला हूँ, हिट ओके कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी एक कंपोजिशन क्रिएट होके आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये पोस्टर वाले में आना है और यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट जो पोस्टर है इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब देखिए ये कंपोजिशन साइज में फिट नहीं हो रहा। फिट करने के लिए आपको इसके स्केल के साइज को थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसे कर लेना। नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे आना है, रेक्टेंगल टूल लेना है और एक मास्क कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए मास्क हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको राउंड कॉर्नर। राउंड कॉर्नर करने के बाद यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसके साइज को अराउंड 200 आपको रख लेना है। अब देखिए हमारा कुछ इस तरीके से ये पूरा वापस से आए। अभी यहाँ पे जो मोड है इसको यहाँ पे जो नो मैट है इसको सेव कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको कॉर्नर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए अभी हमने कौन सा क्रिएट किया था, हमने ये मेरा मेन कॉम था, यहाँ पे मैंने कॉम क्रिएट किया। वापस इसको रीनेम कर देंगे, इसको हम नेमिंग कर देने वाले हैं पोस्ट 1 करके, हम इसकी नेमिंग कर देंगे। हमने पोस्टर 1 नेमिंग की और यहाँ से एक और फोल्डर अभी आप क्रिएट करेंगे। अब इसको हम पोस्टर्स करके यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर और इसको हम इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले। काफी इंपॉर्टेंट और छोटा स्टेप है। अब इसको आपको ऐसे कुछ करना है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये वाला मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप आपको प्रेस करना है कंट्रोल डी। जैसे आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं पोस्टर 2 के नाम से एक इसका डुप्लीकेट आता है, डबल क्लिक करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आपको सेकंड वाली इमेज लेनी है, इमेज ले ऑल्ट प्रेस करना है और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको कर लेनी है, यहाँ पे जो आपको ये वाला फुटेज है इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे ही ऑल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ये ऑटोमेटिक आपका साइज ले लेता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इनके साइज डिफरेंट हैं, इसलिए आपको स्केलिंग में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखिए 2 हो गए। कंट्रोल डी प्रेस करें, डबल क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से तीसरी लेयर को सिलेक्ट करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अभी आपको स्केलिंग को थोड़ा सा सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो स्टेप है मैं बाकी सारे रिपीट करता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। कंप्लीट होने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सारे पोस्टर्स के साथ मैंने देखिए अलग अलग प्रीकॉम क्रिएट कर लिए हैं। अभी के लिए इन सबको आपको क्लोज कर देना है। ओके, क्लोज करने के बाद अभी हमें आ जाना है अपने मेन कॉम्प में। मेन कॉम्प में आने के बाद एक चीज और देख लेंगे अपने फुटेज के साइज को। अगर फुटेज की वीडियो के साइज को देखता हूँ, यहाँ के बाद मेरे वीडियो का यूज नहीं होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा एक काम करने वाला हूँ। वापस जाता हूँ अपने कंपोजिशन सेटिंग में। कंपोजिशन सेटिंग में जाने के बाद जो 450 है मैं इसकी लेंथ को 400 करने वाला हूँ। तो मैं जो काम करना है 400 करना है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये वीडियो है पूरी तरीके से ट्रैक नहीं है, सबसे पहले इसके लिए एक हम ट्रैकर निकाल लेंगे। तो मुझे अराउंड यहाँ से एक ट्रैकर निकालना पड़ेगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ट्रैकर निकालने के लिए साइड में यहाँ पे ट्रैकर पैनल आपको मिल जाता है। यहाँ पे करना है आपको ट्रैक मोशन। ट्रैक मोशन के बाद अपने ट्रैकर को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ जूम कर लें। सिलेक्ट करने के बाद देखिए अपने डिजायर पॉइंट में जहाँ पे पॉइंट आपको बेस्ट पॉइंट ट्रैकिंग पॉइंट्स लगे वहां पे रख लेता हूँ। मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और थोड़ा वेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रैकिंग है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है।
अभी आप क्या करना है, यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपको लेना है एक नल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम एक नल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। उसके बाद एडिट टारगेट करना है, यहाँ पे नल को सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस कर देना है। अभी क्या करना है, आपको अप्लाई करना है और ओके प्रेस कर देना है। देखिए इस तरीके से कुछ हमारा एक नल ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से ट्रैक होके आ गया। इट मीन्स कि हमारा ट्रैकिंग का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट होके आ गया है और आप इसको अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हैं। आप रीनेमिंग में हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ट्रैकर डाल सकते हैं। तो हम इसको ट्रैकर एक कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ट्रैकर हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको एक नया लेना है, न्यू लेना है और इसको नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे करना है। उसके बाद अपने पोस्टर्स वाले सेक्शन में आना है, सारे पोस्टर को सेलेक्ट कर देना है और इसके जस्ट नीचे कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो अभी एक चीज आप देख पाएंगे, जो आपके पोस्टर्स हैं कितने बड़े साइज होके आ रहे हैं। तो अभी क्या करना है, एस प्रेस करना है। एस प्रेस करते ही स्केल की वैल्यू आ जाएगी। अभी स्केलिंग को आपको ड्रॉप डाउन करना है। अब एक मैं मिनिमम नंबर है, मैं 30 का नंबर यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इतना बड़ा साइज इसका आ जाएगा। अभी यू प्रेस करेंगे, ये हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हमें स्केल कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अपने ये वाले नल ऑब्जेक्ट को इस ट्रैकर के साथ पेरेंट और चाइल्ड पेरेंटिंग कर देनी है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी इनके साथ हमें क्या करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इन सबको 3D लेयर में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए 8 तक है, यहाँ से हम ये ट्रैकर हटा, इन सबको हमने 3D लेयर में कन्वर्ट कर लिया। अब 3D लेयर में कन्वर्ट करने के बाद अब हमें इन सारी फोटोज को एक सर्कल में क्रिएट करना है। कैसा, राउंड सर्कल में कुछ इस तरीके से लेके आना है। कैसे लेके आना है वो हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा बेटर मेजरमेंट और बाकी चीजों के लिए यहाँ से 1 व्यू को आप 2 व्यू में कन्वर्ट कर दें। जैसे ही आप 2 व्यू में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से आपको ये सब देखने के लिए मिल रहा होगा। हाँ, इसके पहले एक आप काम कर ले, मेरी गलती से हुई है। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल को सेव नहीं किया,